Today's morning, I read a very beautiful poem on mother. So let's start with that. माँ वो होती है जो बगैर बताए ही बच्चों की आवाज सुन लेती है। माँ वो होती है जो बच्चों की सब मुरादें पूरी कर देती है। माँ खुशी है, माँ बुद्धि है, माँ संस्कार है, माँ उम्मीद है, माँ ही शिक्षा है, माँ ममता का समुंदर है, माँ ही दया का रूप है, माँ ही प्यार की मूरत है। आज के इस पावन दिन पर सभी माँ को प्रणाम एवं उन्हें शुभकामनाएं। Today is Sunday's morning. Everyone is feel lethargic. You get updates, relax, and spend your day with family. Right now, isn't it? Let's boost up your Sunday with this wonderful session. Have you ever stuck while preparing financial reports or while preparing EMI charts for finance and loans and want to learn how to calculate fair values, present values, NPVs, pool seats, and many more formulas in Excel? Not to worry then. Someone has taken this task to waking you people up and coming up with a useful and wonderful learning session on every Sunday at 10 a.m. Any guesses? Who am I talking about? Yeah, our CA Alok Sethi sir. He is a practicing chartered accountant and our passionate mentor and has been practicing and monitoring students and professionals over a decade. He is on a mission to spend financial and Excel literacy among masses of people. So, without taking much time, calling our speaker for the session and founder of Excel Vibes, CA Alok sir. And Thank you, Sheetal, for the warm welcome, and thank you all the participants for joining in. It's a Sunday, and you are up. So we were excited to conduct this, and we had opened the registration on 3rd of May, and we were expecting few registration, but you will be shocked to know, surprised to know that there were 70 registrations. So it shows the importance of finance in Excel. Am I audible? Yes. yes, yes, sir. Okay. So warm welcome to all. Today is Sunday and it happens to be a Mother's Day also. So Sheetal has already greeted wishes for mothers, and I'll continue with that, and then we'll start our session. ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं, लेकिन प्रोफेशनल से पहले हम पर्सनल हैं, पर्सनल से आज हम जिसकी वजह से इस दुनिया में हैं उनके लिए दो लाइनें तो बनती हैं. So there is a very famous song of 𝐤𝐤𝐽𝐿 which I like the most. ठीक है, तो दो लाइनें मैं उसकी सुनाऊंगा, and then we'll start with the session. संडे है तो थोड़ा सा लेजी एनवायरनमेंट है, पीपल आर टेकिंग टाइम टू जॉइन इन, बट वी आर श्योर दैट more people will be there, and it will be a enlightening session for all. So starting with for greeting for our mothers. So कहते हैं कि माँ होती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है. ठीक है, तो दो लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ माँ के लिए, और वो ऐसी हैं. हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर माँ की दुआओं का है घर. मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ मम्मा. सो माँ की दुआ में ऐसा असर है कि खुदा भी पिघल जाते हैं. ठीक है, तो ऑलवेज कीप टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स. ठीक है, और उन्हें हमेशा ध्यान रखें उनका. ठीक है, इट्स आवर ड्यूटी. नाउ मूविंग टू द सब्जेक्ट
of for the day, financial functions. So I'm just sharing my screen, and just let me know in the chat box if it is visible to you all. Okay, so can you all see the screen, Excel screen? Yes. Okay, thank you. Yes. So financial functions in Excel, walk through the topmost used financial function in Excel for personal finance. And now my students, my followers, the persons who are attending my sessions have started calling me a Finman. I'm just now ordinary chartered accountant with a passion for teaching. And since I am also learning a new course on certified, I'm becoming a certified financial planner on the journey towards it. So when we study more about finances, the more interesting it becomes. And so I thought of bringing this financial literacy towards the people, and so that they can be more educated towards their finances and they can manage their finances well. So what is the financial function? I'll be keeping the deliberation both in Hindi and English, because people have joined from different parts of the country, from different states as well. So I'll be giving the deliberation both in Hindi and English, a mix of both the languages. So financial functions या finance function होते क्या हैं? So it is a part of financial management. Now, what is management all about? Management means to manage our resources. So in our daily life, we are managing. Okay, a mother is the best manager because she is managing the entire household activities, even the budget. हम लोग तो सीए बनते हैं और पढ़ाई करते हैं, तब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हैं. वो तो बचपन से ही सिखाती आ रही है और उसको अप्लाई करती आ रही है, राइट? So financial management is the activity concerned with the control and planning of financial resources, which are limited and should be deployed carefully. So as you all understand that the financial resources are very limited and we want to deploy them in the best possible manner so as to reap the maximum benefit. So in this session, we would like to throw some light on how Excel can be used, how the Excel formulas can be used to make our investment decisions easier to take and more informed decision we can take. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है बिफोर वी स्टार्ट द फॉर्मूलाज, वर्किंग ऑन द फॉर्मूलाज इन द एक्सेल. ठीक है, बेसिक चीजें की हम बात करेंगे. स्मॉल पॉइंट्स आई विल टच अपॉन बेसिक पॉइंट्स, बिकॉज सीधा फॉर्मूला पढ़ाने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट वील बी टचिंग अपॉन द बेसिक थिंग्स एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली we'll proceed towards the intricacies of the different financial formulas. So some basic points to be noted before learning the financial formulas. Number one, every financial formula start with a is equal to or a plus sign. Plus, I think is not visible, but you can use a plus sign and a is equals to sign to start any formula. Okay, followed by the formula name and open bracket syntax and ends with the closing bracket. So कोई भी फॉर्मूला हम जब एक्सेल में लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो एक कॉमा इज इक्वल्स टू के साथ होती है, प्लस के साथ भी हो सकती है. उसके बाद आप फॉर्मूले का नाम लिखते हैं और जैसे ही आप फॉर्मूला टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका सिंटेक्स आ जाता है. मैं आपको स्क्रीन पे एक फॉर्मूला टाइप करके दिखा रहा हूँ, सो यू कम टू नो वी what I'm talking about. Is equals to, so if you write something without is equal to, suppose I write the first formula that is FV और मैंने equals to नहीं लगाया तो it is not showing anything. But the moment I put is equal to sign and I write FV, Excel automatically recognizes that it is a formula and it tells you what the formula will do for you. तो ऑटोमेटिकली एक्सेल से ही आंसर आता है कि फॉर्मूला क्या करने वाला है. तो एफवी के सामने एक आपको लाइन दिखाई दे रही है, वो बोल रहा है returns the future value of an investment based on periodic constant payments and a constant interest rate. ठीक है, so the formula itself describes what I am.
ठीक है। उसके बाद ये आपको जो फंक्शंस एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि इस फंक्शन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हम डालेंगे। तो पहला पॉइंट जो था, पहली चीज जो ध्यान रखनी थी कि हमारे को इज इक्वल्स टू के साथ फॉर्मूला स्टार्ट करना है या फिर एक प्लस सिंबल के साथ भी आप फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज योर चॉइस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द कैलकुलेशन। सेकेंड थिंग, whenever you are putting any investment amount, ठीक है, आज हम एक वैल्यू डाल रहे हैं और उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, तो वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा इट शुड स्टार्ट विद द नेगेटिव सिंबल, बिकॉज हाउ एक्सेल विल कम टू नो कि ये पैसा आज आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सो it is important to understand that whatever amount we are putting in, it should be in negative, should begin with a negative sign. Then elements of a formula are to be separated by a comma, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे एलिमेंट्स है। हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूँ, ठीक है, और एनपीआर होता है पीरियड, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज वी आर इन्वेस्टिंग फॉर 3 years and there is no periodic payment, that is PMT, but there is a present value. So यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो भी आप प्रेजेंट वैल्यू रखेंगे जिससे आपको एक फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, उसको आप नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे and then you close the bracket. So this is the amount that you get, this is the answer that you get, ठीक है। तो if you are investing 1 lakh rupees, that is to earn interest at the rate of 5% for 3 years. So after 3 years what amount I will get, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो इसका आंसर है 1,15,000. Now if you observe here, I am getting the answer in INR, ठीक है, मतलब करेंसी साथ में डिनोट आ रही, प्लस जो फॉर्मेट है नंबर का उसमें जो कॉमास लगे हुए हैं, एवरी 3 डिजिट के बाद आई हैव अ कॉमा, लाइक इन द इंडियन फॉर्मेट। बट व्हेन यू जनरली यूज द एक्सेल शीट, आप अपनी एक्सेल शीट में देखेंगे तो वहां पे आपको इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। Am I right? If you are logged in through laptop, then you can open up Excel and you can try this thing, okay, because it is a interactive session where we are learning by doing also, not just listening to what I'm saying, okay. So if you have a laptop with you and you have logged in through a laptop, I would request everyone to open up Excel and try doing it. Just put any number in Excel and see if it is appearing in this particular format. See, whatever number I'm writing, it is showing me in this particular format. So I'm just waiting for 1 or 2 minutes for you to try it out, and then if once I start getting the answers, then I'll tell you why you are getting a different thing and I am getting this, and how you can apply this feature into your Excel or your system also. So has anyone tried putting the number in Excel and see how it is coming, whether you are getting the commas or you're not getting the commas? See, this is very elementary thing, but it is very important, because अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं या फाइनेंशियल्स बना रहे हैं और हम इंडियन रुपीज में चाहते हैं या इंडियन फॉर्मेट में चाहते हैं, बिकॉज जनरली क्या होता है, कई बार सपोज देयर इज सम अमाउंट, let me open a different Excel and let me show you there. See, can anyone tell me what amount is this?
आप लोग क्या करेंगे, पीछे से जीरोस काउंट करना चलेंगे, वन चालू करेंगे, ठीक है, वंस एंड 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, सो इट इज 52 करोड़ 50 lakhs, ठीक है, बट इट टुक अस दैट टाइम टू वर्क ऑन इट, ठीक है। बट अगर हम इसी एक्सेल में जाके और इसको अगर कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेट मी शो यू डूइंग दैट, if you put just a comma, so it automatically converts the numbers into a different format which is easy to read. So my question again to you is that when you convert this in your Excel, are you getting the same results? Are we getting the same results? Can we have some reply in the chat box? See, that is the benefit of attending a live session, so that you can interact. Otherwise there are so many videos available on YouTube, but when it comes to learning, it has to be a two-way communication. Okay, so Sheetal says that I get a dollar in Indian, and how to convert into INR. Okay, so let me answer this question now. So how to convert your number into INR and this? So basically, what you have to do is you have to, let me just put some other number again. Okay, now Control 1 is the key, shortcut key. I believe in using shortcut more rather than going with the regular commands. ठीक है, आप शॉर्टकट जितना ज्यादा एक्सेल में यूज करेंगे उतना फास्ट एक्सेल होगा, उतना ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तो Control 1 फॉर्मेट सेल्स होता है, ठीक है, आप किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज Control 1। इन दिस यू गो टू नंबर, ठीक है, नंबर नहीं, यू नीड टू गो टू द करेंसी पार्ट, ठीक है, और करेंसी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे on the symbol you can select the different symbols. You will see that dollar is there, pound is there, okay, Chinese yen is there, Japanese this thing is there, currency is there, so different currencies and is there, and you will see the Indian rupee symbol also, okay, Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, okay, you can select anyone, okay, and then you can press OK. But still ये जो कॉमास है ना, ये आपके उस तरीके से नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, so there is a different setting for it. Do you want to learn that setting? See, we'll be definitely coming to the formulas part, but it is important to understand these small things so that they can make a huge impact in your working. Okay, so just note down what you have to do is you need to open control panel. And I'm sure that you will not get these kind of tricks in the YouTube and different sessions on finance, because they just talk about finance. Okay, so on this control panel, you have to check out for clock and region. On the region, you have to go to change date, time and number formats. Okay, तो आप कंट्रोल पैनल से रीजन पे आएंगे, क्लॉक एंड रीजन पे, और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स दिखेंगी आपको, ठीक है, एडिशनल सेटिंग्स। Is the screen visible? Are you able to see my screen? Wait, I'll have to share it again. Okay, so let me do it again for you all. So what you have to do is you have to open control panel. Okay, so you have to open control panel. In the control panel, let me just zoom in. You will see this clock and region. I hope it is visible now. Clock and region. When you click on it,
you will see region settings, date and time and region. So when you go to region, a dialog box open up और यहाँ आपको additional settings दिखेंगे, additional settings, ठीक है. So I repeat the path: control panel, date and time, clock and region, and then you have to come to this additional settings. और यहाँ पे आपको दिखेगा कि you will see the currency. तो करेंसी सिंबल आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से रुपी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू गेट दिस रुपी सिंबल. सी वी आर लर्निंग वेरी बेसिक थिंग्स. आई हैव नॉट स्टार्टेड टीचिंग यू फाइनेंस, ठीक है. अभी हम लोग फॉर्मूलाज पे नहीं पहुंचे हैं, बट दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स व्हिच कैन मेक अ बिग डिफरेंस. सो इन योर कीबोर्ड्स, इफ यू आर यूजिंग अ अपडेटेड कीबोर्ड, तो आप देखेंगे अगर कीबोर्ड पे नजर डालेंगे तो 4 के नीचे आपको एक रुपी सिंबल दिखेगा, ठीक है. इफ यू पुट if you check out your keyboards, 4 on the top of 4 you will see a dollar sign, and on the bottom of the 4 on the right hand side you will see a rupee sign if it is visible. Then if you press control shift and 4 key, control shift and 4, I repeat, control shift and 4, so that will insert the rupee symbol. See, now the rupee part is coming. Control shift and 4 inserts the rupee symbol. So it converts your amount into rupees automatically. So you can select that rupee symbol from here, ठीक है, और आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा. कंट्रोल शिफ्ट एंड रुपी 4, नंबर 4. आई एम मेंशनिंग इट इन द चैट बॉक्स. कंट्रोल प्लस शिफ्ट plus 4 key. Yeah. So what you have to do is you have to select that rupee symbol here, and यहाँ पर आप जहाँ नंबर फॉर्मेट में हम जाएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है डिजिट ग्रुपिंग. In the 4th option you will see digit grouping. So यहाँ पर you can select कि what kind of group you want. Generally होता क्या है कि 3-3 के ग्रुप्स में ग्रुपिंग होती है and कॉमास लगाए जाते हैं. In the last option you will see that it is grouping in 3, then 2 digit, and then 2 digit, and then 2 digits. You can select that format and you can just say okay. And once you apply this setting, wherever you type in words, in numbers, you will get this format. Okay. So now we come to the main part, that is the finance functions again. So if you're attending the session for the first time, or if you're studying financial function for the first time, you will be like this. ठीक है, ये हेरा फेरी से I have taken that scene. ठीक है, so everyone is like surprised and excited to know, अरे वाह क्या क्या functions है, इतने सारे functions कैसे होगा, 1 घंटे का time है, आधा घंटा तो निकल चुका है. How you are going to learn? But I think you all are excited. So if you are excited, can you give me a yes in the chat box? If you are excited to begin with this journey, can we have a yes? Thank you, Vishal. Thank you, Sheetal. So let us begin this journey, and we start our first function of the day, that is future value. Sorry. Future value. I hope the screen is visible. Should I zoom in more, little more? Okay, fine. So I have arranged the formulas in such a way that I have put some case studies, so that first we discuss the case and then we understand which formula to use, because Excel में बहुत सारे formulas हैं. अब कौन सा कहाँ काम में आएगा और कैसे काम में लेना है, that is the skill, that is the art that you should understand. ठीक है, you can get the formula from anywhere, but where to use that exactly that formula, यही आपको इस सेशन में आज सीखना चाहिए. ठीक है, ओके. तो हम आज जो भी पढ़ाई करेंगे ना, बाबूराय स्टाइल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिधिमा इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन अ एफडी earning interest at 5.5% for 3 years. She wants to know what will be the value of the investment after 3 years.
तो रिधिमा ने 1 लाख रुपए एफडी में डाले हैं और एफडी का ब्याज गिरता ही जा रहा है, तो अभी 5.5% मिल रहा है। तो 3 साल बाद रिधिमा जानना चाहती है कि व्हाट विल बी द वैल्यू, कितना मिलेगा रे बाबा। ठीक है, तो दैट आंसर इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू क्या बताता है आपको? इट is used to find out the future value of a particular investment which has a constant interest rate and periodic oblique one time payment. So the condition is that there should be a constant interest rate. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रेट जो है वो फिक्स्ड है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। तो 5.5 is fixed for 3 years and there is a fixed one time payment of 1 lakh rupees. We'll talk about the regular payments also, बट अभी हम जो पहला केस डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार 1 लाख रुपए लगा दिए हैं, 5.5% का ब्याज मिलने वाला है 3 सालों के लिए, तो कितना पैसा बन जाएगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। ठीक है, तो FV is future value. Now what are the elements that you require, and that elements will be common in each and every formula. जितने भी फॉर्मूलाज हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें ये सारे एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है। तो एक बार आप बच्चे समझ लें, पूरी क्लास में ये काम में आएंगे, पूरे सेशन में ये काम में आएगा। फर्स्ट इज द रेट। सो रेट इज डिनोटेड बाय रेट ओनली, ठीक है, और यू कैन से R also. So here in our example it is 5.5. So we can write 5.5 and percentage also, or you can convert into decimal signs also. ठीक है, तो 5.5% मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है इसकी। NPR is number of period, तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रही है? 3 years के लिए, तो 3 डाल दिया हमने यहाँ पे। PMT is a series of payment. PMT is a shortcut for payment. ठीक है, तो जो भी आपका रेगुलर पेमेंट अगर होता है तो PMT यूज में होगा। ठीक है, अगर रेगुलर पेमेंट नहीं है तो फिर PMT will not be used. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इज द अमाउंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग टुडे। सी प्रेजेंट, फॉर्मूला याद नहीं करना है, लॉजिकली समझना है। सो इफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला वेल, द टर्म्स वेल, यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, है ना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग इज रिक्वायर्ड। So we are going to find the future value and future value of the present amount. आज हमारे हाथ में कुछ अमाउंट है, उसका फ्यूचर वैल्यू मैं जानना चाह रहा हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? द अमाउंट विच यू आर होल्डिंग इन योर हैंड टुडे and the amount that you are going to invest for future gains. So in our example the amount is 1 lakh rupees, and as I told you, and let me just go to the sheet again, जो हमारे basic conditions थी, people have joined at this point of time also. So let me just quickly go through these 4 again. You have to start the formula with a comma sign. All the investment that you are going to put in the formula should be accompanied by a negative symbol, minus sign के साथ होगा। जितने भी एलिमेंट्स है उसको सेपरेट कॉमा से करेंगे। और फोर्थ और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है वो ये है कि एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्मूला शुड बी इन द सेम सीक्वेंस as shown in that syntax as you type the formula name and the opening bracket. ठीक है, तो let us write the formula now. ठीक है, just a minute, let me just give me a moment. Okay, so I'm sharing my screen again with you all. So I'm zooming in, and here we are going to see the formula FV. Okay, so when we type FV,
it shows us the elements. Okay, let me zoom in a little more. Okay, is it now visible properly, syntax and all? So if you need to find out the rate, NPR, PMT, PV, and type. So what is the rate in a formula? 5.5. Now there are two ways of putting it a formula. Okay, first you can just write down the values. So first I am just showing the first method. हमने यहाँ पे rate लिख दिया. Then NPR was 3. Was there any PMT? Was there any PMT? No, there was no PMT. So I'll put a 0. Okay, you cannot skip anything in Excel. You need to put a 0. There is no PMT. There is no periodic payment. We are investing for one time. And what is the present value? What is the amount that you are going to invest today? It is 1 lakh. So it has to be accompanied by a minus sign. ठीक है, चलो एक बार एक काम करते हैं, माइनस हटा देते हैं. सपोज भूल गए ना, आदत है भूलने की, रजनी है सब लोग, भूल गए हम लोग, याद नहीं रहा. ठीक है, एंड सी दिस लास्ट टाइप 0 और 1, व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, टाइप से क्या मतलब है, यहाँ पे 0 और 1 से क्या मतलब है? तो टाइप इज ऑफ नो यूज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन वन टाइम. ठीक है, अगर आप एक ही बार इन्वेस्ट करें तो टाइप का कोई मतलब नहीं रह जाता है. अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हमको देखना है कि हम बिगिनिंग में कर रहे हैं या एंड में कर रहे हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर इफ यू इवन डू नॉट पुट द लास्ट वैल्यू दैट विल बी ओके. अभी देखिए यहाँ पे आंसर तो आ गया है, माइनस नहीं भी लगाया तो भी वी हैव गॉट दिस आंसर एज 1,17,424. लेट मी चेंज द फॉन्ट कलर. ओके, सो इट इज कमिंग इन नेगेटिव, इसलिए वो रेड में दिखा रहा है. ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस नहीं लगाया. अभी हम माइनस लगा देंगे. सी द आंसर इज कमिंग इन पॉजिटिव विथ अ रूपी सिंबल. ठीक है, दैट मीन्स इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज and that 1 lakh rupees is earning 5.5% rate of interest after 3 years, your money value will be 1,17,424. ठीक है, तो ये था फ्यूचर वैल्यू, मतलब आज कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करें उसका फ्यूचर में वैल्यू क्या होगा. ठीक है, नाउ सपोज यू वांट टू चेंज, यू वांट टू फाइंड आउट कि इफ आई गेट अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट माय अमाउंट विल बी. 3 साल बाद मुझे 1.5 लाख की जरूरत है, मैं ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जो मुझे ज्यादा अमाउंट दे दे. आई वांट 1,50,000, माय 1 लाख टू बिकम 1,50,000. तो अभी क्या करना पड़ेगा, बार बार हमारे को यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट इज द बेटर वे? सो इफ यू पुट द अमाउंट इन टेबल्स. ठीक है, आपने ये टेबल बनाई है. अब हम क्या करेंगे, so this is very important what I am going to show now, so please concentrate here. We are not typing the values in the formula, we are selecting it from the table. ठीक है, तो हमने FV का फॉर्मूला स्टार्ट करा. पहला चीज क्या मांग रहा है हमसे, रेट. See, here is the rate. So I just go to the particular cell and I select that cell. Then I put a comma. Then it is asking for NPR. NPR is a period. तो मैंने यहाँ पे 3 select कर लिया. Then I put a comma. It is asking for PMT. PMT is 0. I put a 0. Selected a 0, comma. And PV is -1, 1 lakh. So I have selected the PV also. Type you can take any. If you do not take, then it will not make any difference, even if you do not take. So again, it is giving the same answer. ठीक है, तो सर क्या फर्क पड़ा, आपने टाइप करने की जगह वैल्यू सेलेक्ट करी, तो what difference is it making? So Amrita is asking, is it compound interest or simple interest? So it is compound interest. Okay, it is compounding. Okay, and we'll see, in the FE schedule I'll show you that also. Okay, now see 1,17,000 the amount becomes.
after 3 years. Now suppose if I get a better rate of interest, तो मुझे यहाँ पे ही मैं वैल्यू चेंज करता हूँ. सपोज आई एम गेटिंग 7.5. सी द अमाउंट इज चेंजिंग इन द फॉर्मूला. ठीक है. इफ आई चेंज द टाइम पीरियड कि 2 साल बाद ही पैसा चाहिए, तो 2 साल बाद कितना मिलेगा, द अमाउंट इज चेंजिंग. ठीक है. इफ आई राइट 12% ईयर, even the amount is changing. ठीक है. So I was wanting 1 lakh to become 1 lakh 15 3 years. So it was not possible by investing in an instrument at which is earning 5%. But if you invest in in instrument which can give you 12.5% or maybe 14%, then you can come close to that 1,50,000. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, आपका अमाउंट चेंज होता जा रहा है. तो इसे बोलते हैं रेफरेंसिंग, कि आपने फॉर्मूला एक जगह पे लगाया बट उसको रेफरेंस दे दिया टेबल से. तो व्हेन यू चेंज द वैल्यूज इन द टेबल, योर अमाउंट चेंजेस. गेटिंग इट? ओके. नाउ दिस वाज द फ्यूचर वैल्यू. 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करे 2 सालों के लिए 10% ब्याज से. ठीक है. इट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट. सॉरी. सो बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख एट 10% यू गेट 10,000 रुपीज. ठीक है. उसके बाद 1 लाख 10 वैल्यू हो जाती है, उसका 10% कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है 11,000. दैट इज हाउ यू आर गेटिंग 1,21,000. ठीक है. तो जो आपका अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हुआ, उसी अमाउंट पे आपको और इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इफ समवन इज इन्वेस्टिंग रेगुलरली. ठीक है. अभी हम एफई पर ही हैं, फ्यूचर वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं. एंड द सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू आर डिस्कसिंग. इफ समवन इज इन्वेस्टिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, व्हाट विल हैपन इन दैट पर्टिकुलर केस. Okay, so we take the second case now. Pradipha invest 1 lakh rupee every year in PPF. ठीक है. I'm just highlighting what I'm reading. ठीक है. मैंने बोल्ड कर दिया है इसको, तो आप इधर ही कॉन्सेंट्रेट करें. ठीक है. Pradipha invest 1 lakh rupees every year in PPF, earning interest at 7% for 15 years. And this is a रूटीन सिचुएशन. ये लोग होता है, ये हम लोग पीपीएफ में पैसा डालते हैं, 1 लाख 1.5 लाख हर साल डालते हैं और 7% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यू वुड लाइक टू नो कि मैं 15 साल तक अगर 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करता हूँ पीपीएफ में, which is going to give me a rate of interest at 7%, assuming it to be constant, although it is not. PPF has moved down from 12% to 9% to 7%, and it might come to 6% also. But here for the understanding, we are keeping it at 7%. हम 7% ही मान के चल रहे हैं 15 सालों के लिए. So what is the difference here? Can anyone tell me what is the difference in situation 1 and situation 2? You can unmute yourself and answer, and you can even answer in the chat box. What is the difference in the two situations? Both the situation are on the screen. Yes, every month PMT. Very good. Thank you. Rosleji, thank you. So yes, every year you are investing. So it is not a one-time investment. It is a regular investment. Okay, so we again put that formula of FV, future value, and rate. Now here the rate is not 5% or 5.5%. It is 7%. So I'm just writing 7% here. Time is 15 years now, and the amount कहाँ आएगा? PMT में लिखेंगे या PV में लिखेंगे? Where should I put the amount here? In PV or PMT? N is more than 1. Yeah, N is more than 1, right? PMT, yes. You will not, you will mention PMT में और minus याद रखिएगा. Minus के साथ में 1 लाख लिखेंगे. There is no PV. ठीक है. There is no present value. There is no one-time investment. Type doesn't matter over here. ठीक है. हाँ, टाइप मैटर्स बिकॉज इट इज पीएमटी. तो अब यहाँ पे हम टाइप समझेंगे कि टाइप 1 और 0 में क्या फर्क होता है. तो लेट मी पुट इन द फॉर्मूला फर्स्ट.
FV rate. What is the rate? I'm just taking from here 7%. What is the NPR? 15. What is the payment per installment every year? PMT. Okay, it is 1 lakh. There is no PV and type. अब देखिए टाइप पे जब आते हैं ना तो ये बोल रहा है 0 at the end of the period and 1 at the beginning of the period. Now people have a habit of investing every month, every year in the month of April itself, और एक ही तारीख को डाल देते हैं. And here I would like to give you I would like to highlight one point to you. In PPF, when you invest from day 1 to 5th day of every month, 5 तारीख से पहले अगर आप PPF में इन्वेस्ट कर लेते तो आपको उस मंथ का इंटरेस्ट मिलता है एवरेज बैलेंस पे. अगर आप 5th के बाद इन्वेस्ट करते हैं 6th 7th 8th 9th 10th एनी डे और इवन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, you do not get any interest for that particular month. So always remember that whenever you have to invest any amount in PPF, it has to be in the first 5 days of the month so as to earn interest for that particular month also. ठीक है, तो हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो रहा है इन्वेस्टमेंट, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट. सो if you are investing 1 lakh rupees every year for 15 years and that is going to earn you a rate of interest of 7%, then after 15 years that 15 lakh ka investment at the rate of 7% will become 26 lakhs 88,805. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर 1 लाख नहीं करके 1.5 लाख कोई इन्वेस्ट करता है, जो कि करती है MATC के लिए, तो if you are investing 1,15,000 for 15 years at 7%, what will be the amount that you will get after 15 years? So that will be 40 lakh rupees. ठीक है, 40 lakh rupees. Now if I give you an alternative, see, this session is not we are not promoting any product here, but we are just sharing some information, some education, some literacy over here. ठीक है, आप 7% guaranteed के पीछे PPF में इन्वेस्ट करते हैं. The interest is interest free, the interest is tax free, even the amount that you get is tax free, but there is a lock in of 15 years. ठीक है, although you can withdraw the money after 6 or 7 years, some partial amount can be withdrawn, but limitation is that कि 6% 7% rate है. Suppose ये rate अगर 6% हो जाता है तो आपके अमाउंट का क्या होगा? It will decrease. 37 lakhs rupees मिलेगा आपको 15 लाख का. ठीक है, if you are investing 1 lakh for 15 years, so we stick to that example, 1 lakh for 15 years. Now if you take risk and if you invest in markets, stock market or mutual funds or any other instrument that does not guarantee any guaranteed returns, but over a period of time it gives you 12%. ठीक है, 12% अगर आपको ब्याज मिलता है तो अभी 6% से 24 लाख रुपए था, 1 लाख 15 लाख का 24 लाख बना था 15 सालों में. See what 15 lakhs will become at the rate of 12% after 15 years. Any guesses before I press enter? Any guesses in the chat box? Someone who want to try? अगर कोई एक्सेल खोल के बैठा है वो साथ में कर रहा है तो can anyone tell me what will be the amount of 1 lakh rupees if invested at 12% for 15 years? चलो संडे को ज्यादा तंग नहीं करेंगे लोगों को, ठीक है, अदरवाइज वी विल नॉट कम इन द नेक्स्ट सेशन. बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सर. ठीक है, सो द अमाउंट विल बी 41 lakhs. yes, 41 lakh and 75,000. more than 2 CR. no sir, 2 CR से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, हाँ अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं, I'll show you. जो आपने ये चीज बोली है मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, so suppose you are investing on a monthly basis. ठीक है, तो there is a rule, simple rule, because someone has started this conversation, तो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा and then we'll move to the next function. ठीक है, so we were discussing future value. future value क्या करता है? आपको present value से future value convert करके देता है. 3 चीजें constant होनी चाहिए. एक तो आपका investment amount, that is the present value. दूसरा the rate of interest that you are going to earn and the time period for which you are going to invest. Can you put n as 12 and see the FV? Okay, fine. So n is 12. So that means you want to invest for 12 months, 12 years. So I am putting 12. It is coming to 27 lakhs.
1 lakh rupees invested for 12 years. Okay. Now, what I was saying is there is a rule of 15, 15 and 15. Anyone knows that rule? 15, 15, 15. Anyone in the session who is aware of this rule? 15, 15, 15. Okay. Yes. So you can unmute yourself and answer. What is this 15, 15, 15? 15,000 per month for 15 years at 15% gives you 1 CR. Very good. Thank you, sir. So I'm going to show you how it works. What he said, just suppose you get 15% rate of interest and you invest for 15 years. Every month 15,000. ठीक है, तो यहाँ पे आप PMT हम कितने ले रहे हैं? 15,000 रुपए ले रहे हैं. ठीक है, तो 15, 15, 15 कैसे वर्क करता है मैं आपको बता रहा हूँ. 15,000 रुपए एवरी मंथ इन्वेस्ट करेंगे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, you are getting 8,20,000 only because it is taking 15,000 as a yearly investment. Now what changes you have to make here, that let us understand this. ठीक है, because every time you are not investing on a yearly basis, you are in जो SIP करता है तो every month you are investing. ठीक है, so if you are going to earn 15% rate of interest on a monthly basis on your investment, तो हम लोग क्या करेंगे, रेट को डिवाइड कर देते हैं 12 से. ठीक है, because every month you are going to calculate the amount. Your period will be multiplied by 12 because you will be investing 12 times in a year. Every month you are investing, मतलब 12 महीने हम इन्वेस्ट करें, 12 बार इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, और हर बार कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? E32 is 15,000. ठीक है, एंड PV 0 एंड द टाइम वैल्यू इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 तारीख को. So let us see what amount it brings to us. And it is more than 1 CR. 1 CR, 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे आपको. आप सब करोड़पति बन जाएंगे अगर आप 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं पूरी शिद्दत के साथ और बंद नहीं करते हैं वो इन्वेस्टमेंट और चलाए रखते हैं. अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि अगर 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट हो रहा है फॉर 15 ईयर्स, तो कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने? कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया? 27 lakh rupees only. 27 lakh rupees. That means 15,000 into 12 मतलब 1,80,000 रुपए साल का इन्वेस्ट कर रहे हैं. 15 सालों में 27 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा और 15 साल बाद अगर 15% का ब्याज आ जाता है, which is possible in case of stock market or mutual funds. ठीक है, although it is not a recommendation to invest in any, but it is possible through the use of these instruments. ठीक है, getting a 15% return is not something which is a miracle, but it is possible. But long term is the game. लंबे समय तक आपको बने रहना पड़ता है. तो 15% से अगर 15 साल हमको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल जाता है तो 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं. अगर अब यहाँ पे 12% कर दें, someone is saying कि if we get 12%, 15% बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, 12 कर दीजिए. ठीक है, कोई बात नहीं, 12 कर देते हैं तो भी 75 लाख रुपीज यू आर गोइंग टू गेट. 75 लाख रुपए, अ क्वार्टर लेस देन अ करोड़ रुपीज. ठीक है, अगर कोई बोलता है सर 15,000 पॉसिबल नहीं है महीने का निकालना, 10,000 ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं सर. 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करें एवरी मंथ, 10,000 every month means 1,20,000 per year. ठीक है, 10,000 every month means 1,20,000 every year, and 1,20,000 every years for 15 years is 18 lakh. 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 12% से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पैसा आपको मिल जाएगा इन 15 ईयर्स. ठीक है, 3 टाइम्स कैसे बोला सर आपने? 18 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इट इज 54 लाख, 50 लाख रुपए करीब मिल रहा है. ठीक है, सो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 3% यू गेट फॉर 15%. 15% इज रीजनेबल. यस सर हेमंत जी, यू आर वेरी एप्ट सर. यस, वी आर अ डेवलपिंग नेशन. सो 15% for 15 years, that is the rule to become a crorepati. 15, 15, 15. चलिए,
So let us move ahead. आगे बढ़ते हैं. Hope you are enjoying the session. Although I'm taking time because I don't want to rush with it. ठीक है, तो जितने फंक्शंस आज कवर हो सके हम लोग आज करेंगे, और जितने रह जाएंगे नेक्स्ट संडे वी आर ऑलवेज कमिंग अप विद द सेशंस ऑन एवरी संडे. So next Sunday again we will continue from where we leave today. Okay. Thank you. Thank you. So this is the first function that we have discussed, that is the future value. ठीक है, फ्यूचर वैल्यू क्या बताता है कि अगर आज कोई पैसा आप लगा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हैं या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, तो कितना पैसा बन जाता है. नाउ द सेकंड फॉर्मूला इज एफवी शेड्यूल. ठीक है, तो अब ये एफवी शेड्यूल क्या होता है, तो पहले हम एक केस लेते हैं. ठीक है, और इस केस में क्या लिखा है, रवनीत हैज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 2019. ठीक है, तो दिसंबर में रवनीत के पास पैसे आए और उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए. It is expected that the interest rate will change every year. ठीक है, तो she has invested in stock markets or mutual funds or any other instrument which is not giving a fixed return but it is giving a volatile return, और expect कर रहे हैं कि 2020 में 21 में और 22 में 12%, 15% और 10% रिटर्न आएगा. मतलब रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट फिक्स्ड, नॉट गारंटीड, एफडी नहीं है. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द ईयर 2022. तो सर अगर ये केस है तो क्या हम एफवी से कर सकते हैं इसको? इफ दिस इज द केस, कैन वी अप्लाई द एफवी फॉर्मूला हियर? यस और नो? Vishal says no. There are 27 participants. I want some more answers, please. Yes, so I'm started getting no. Why no? Why no? So Sudhar says yes. See, अभी हमने समझा था एफवी में. Yes, very good विशाल जी. Interest rate is changing. Yes, सुगीता मैम, you're correct. Rate is changing. See, अगर रेट कांस्टेंट होता ना तो एफवी काम में आता, क्योंकि एफवी की कंडीशन ये थी. मतलब क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, ये गलत बात. ठीक है. एनीवेज, तो फ्यूचर वैल्यू में क्या था कि रेट चेंज नहीं हो रही थी, है ना, रेट चेंज नहीं हो रही थी, कांस्टेंट थी. और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रही है. रेट चेंज हो रही है, इसलिए ही हम एफवी शेड्यूल यूज कर रहे हैं, शेड्यूल यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट द बिकॉज द रेट्स आर चेंजिंग. सो लेट मी मूव अहेड. ठीक है, और एफवी में कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट था. ठीक है, ये आई वांटेड टू शो यू दैट. अब हम एफवी शेड्यूल पे आ जाते हैं. तो ये क्या बोल रहा है, द फाइनेंशियल फंक्शन इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू नीड टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू विद वेरिएबल इंटरेस्ट रेट. सो हियर द पॉइंट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरिएबल. ठीक है, इट इज चेंजिंग एवरी ईयर. एफवी इज कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द पीरियड. यस, राइट. नाउ फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? सो एफवी शेड्यूल इज प्रिंसिपल एंड शेड्यूल. तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, और शेड्यूल क्या है, सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट पुट टुगेदर. इन केस ऑफ एक्सेल वी यूज डिफरेंट बॉक्सेस एंड सिलेक्ट द रेंज. ठीक है, कैसे करना है हम देख लेते हैं. मतलब अलग अलग इंटरेस्ट रेट और ये, तो हमने एक शेड्यूल ऑलरेडी बना रखा है. दिस आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सो दैट वी कैन सेव द टाइम. ठीक है, एंड वी विल जस्ट पुट सम calculations here. So 1 lakh rupees you are investing. Ravneet has invested in the year 2019. At the end, now she is expecting to earn at 3 different rate of interest. पहले साल 12%, उसके बाद 15% और फिर कम होके 10%. ठीक है, तो अगर ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो क्या रुपए बनने वाला है? सर अगर एफवी लगाना चाहेंगे ना तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मैं रेट में क्या डालूंगा, 12 डालूं, 15 डालूं या 10 डालूं, एक ही तो डाल सकता हूँ. ये मेरी लिमिटेशन है यहाँ पर. तो इसके लिए हम एफवी शेड्यूल यूज करते हैं. ठीक है. अच्छा, एक और ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कि जब भी कोई फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना है, यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर फॉर्मूला. यू कैन जस्ट राइट एफ एंड देन इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज. और अगर आपको एफवी याद है तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं. आप एरो की यूज करके एंड देन रेट का वेट लेकर, यस, हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं, बट आई डोंट नो वेदर विल गिव यू द करेक्ट आंसर नॉट. वी कैन ट्राई दैट. रेट का वेट ले सकते हैं हम. ठीक है, वेटेड एवरेज करके भी कर सकते हैं. एवरेज रेट यू कैन टेक. सो वी विल ट्राई विद दैट. बट अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफवी शेड्यूल कर रहे हैं. तो मैं आपको बता रहा था कि आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, एफवी करा आपने एंड यू कैन प्रेस द टैब की. ठीक है,
तो ये ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। टैब की दबाना है आपको। अब प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट हियर, विल सिलेक्ट फ्रॉम हियर 1 लाख एंड द स्केड्यूल, ठीक है। स्केड्यूल इज व्हाट, स्केड्यूल इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर, डिफरेंट रेट्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द रेट्स, बस दैट्स इट। ये रेंज आपको सेलेक्ट करनी है 12, 15 और 10, और ब्रैकेट बंद करना है और जय श्री राम। एंड देखिए द आंसर इज 1,14,680 रुपीज, ठीक है। अब जो विशाल जी कह रहे थे हम वो भी करके देख लेते हैं एक बार, इसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट राइट एवरेज एंड आई विल सेलेक्ट द 3 नंबर्स, और ये 12% आ गया सर इसका एवरेज, ठीक है, बिकॉज द रेट इज टोटल इज 37 डिवाइड बाय 3, तो ऑलमोस्ट 12% आ रहा है। अब अपन देखते हैं कि अगर 12% से ये पैसा ग्रो होता है तो क्या यही बनता है क्या अमाउंट। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस रेट, NPR is 3, there is no PMT, there is a PV of 1 lakh and there is no type. 1,41,750, almost it is coming to same. So ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक और साल बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18%, ठीक है। एंड इफ आई वांट टू इंक्लूड दिस, तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे इसको 13 कर दीजिए एंड यू गेट 1,67,000 एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे भी आप इसको 13 कर दीजिए। सो योर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14। सो इधर देखिए आंसर डिफरेंट हो गया। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू, ठीक है। विशाल जी आई होप यू गॉट द आंसर। तो हम लोग को एग्जैक्ट अगर चाहिए तो हम रेट का वेट लेकर, तो वेट कैसे देंगे सर, हाउ विल यू गिव द वेट्स, मतलब 1 2 3 ऐसा करके आप बोल रहे वेटेड एवरेज, तो फिर जब रेट बढ़ रहे होंगे तो हमारे को वेट ज्यादा देना होगा, जब रेट कम हो रहे होंगे तो आपको कम देना होगा। तो वो सब करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट स्केड्यूल फॉर्मूला ही काम में ले लें, ठीक है। FE स्केड्यूल से यू कैन फाइंड, ठीक है। चलिए, सो एवरीवन क्लियर विद दिस, whenever there is a change in the rate and there are multiple rates, then you have to use this FV schedule. Then we come to the present value, ठीक है। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, अब फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, प्रेजेंट सब देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू कब काम में आता है सर, तो चेतन चेतन and Ravneet and Ridhima and Sheetal, they all are my team members for this Excel sessions that we do, and they are doing a wonderful job with me, ठीक है। और हम लोग मिलके ये सब चीजें बनाते हैं and they assist me so that I can do this for the love of teaching, ठीक है। So I thank you all the team members for being there with me and assisting me in my this endeavor। चलिए, तो चेतन wants to accumulate 10 lakhs in 5 years time from now, है ना। आज से 5 साल में 10 लाख रुपए चेतन को इकट्ठे करने हैं। It is expected that the investment will earn interest at the rate of 12%, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 12% से इंटरेस्ट अर्न करेगा, ठीक है। What would be the amount of investment he is required to do today? तो चेतन मेरे पास आया, बोला सर एक चीज बता दो, एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। तो सर 10 लाख रुपए चाहिएंगे। 10 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी आती है सर, आ जाएगी, मैं तो अभी नया नया प्रैक्टिस चालू किया तो 10 लाख से ऊपर नहीं सोच सकता। 10 लाख वाली गाड़ी खरीदनी है, 5 साल में जमा करना है, कितना रुपए आज से इन्वेस्ट करना चालू कर दूं, 12% मुझे लगता है कि मिल जाएगा। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा सर, इसका आंसर मिलेगा फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए बताता हूँ। तो फ्यूचर वैल्यू क्या करता है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू क्या करता है, फ्यूचर में जो आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है, व्हाट अमाउंट यू वांट टू अक्यूमुलेट इन द फ्यूचर, उसके लिए प्रेजेंट में व्हाट अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट, ठीक है। तो कितना लगाना है रे बाबा, कितना मिलेगा नहीं, कितना देना है, कितना लगाना है, कितना पैसा लगाऊं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट टाइम के बाद इतना पैसा मिल जाए। तो सर सिंपल है, पीवी का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटर्न द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, द टोटल अमाउंट दैट अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज वर्थ नाउ। फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसकी आज की वैल्यू क्या है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, या फ्यूचर में एक अमाउंट चाहिए उसको आज कितना लगाऊं कि वो फ्यूचर में उतना मिल जाए, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ आई टोल्ड यू द पैरामीटर्स आर सेम, कुछ नया नहीं है, बस तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। तो रिश्ता वही सोच नहीं है, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे पैरामीटर सेम है, बट आपको आंसर अलग अलग मिलेंगे अलग अलग फॉर्मूला से।
पीवी रेट, रेट क्या बोली जितने ने 12%, ठीक है। एनपीआर क्या है, 5 years, ठीक है, 5 साल बाद पैसे की जरूरत है। पीएमटी मतलब सर एक बार में ही पैसा लगाना चाहता हूँ, है ना, बार बार नहीं, तो पीएमटी हम 0 रख रहे हैं अभी, ठीक है। आई शो यू बुद्ध द वेज। और फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए, 10 लाख रुपीज, ठीक है। सर मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया है, आई हैव नॉट पुट अ नेगेटिव सिंबल हियर, कैन एनीवन टेल मी व्हाई? I have not put a negative symbol here at 10 lakh rupees. Income, very good. Okay. Now, return of money, yes. So this is not the investment. मैंने क्या बोला था कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा, ये हमारे को पैसा मिलने वाला है, जो भी हमारे को मिलने वाला है वो हम कहाँ रखें, वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो आप लगाने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो, वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे यू डोंट हैव टू पुट अ नेगेटिव सिंबल, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन फ्यूचर वैल्यू, यस राइट, करेक्ट। तो ये ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू है। ओके, नाउ इफ कैन एनीवन टेल मी, इसका मतलब क्या होगा कि 10 लाख रुपए अगर चाहिए हमारे को, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, 5,67,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई देयर आई जस्ट type 1 why? Type 1 because they are investing every in the beginning, ठीक है, बट अगर एक ही बार करे तो टाइप की जरूरत ही नहीं है, यू कैन स्किप द टाइप पार्ट आल्सो, ठीक है, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग फॉर द वन टाइम। Thank you, sir. Okay. Again sharing my screen and let us take some more few functions. I hope you don't mind staying here for next 15 minutes. Can we extend this meeting for next 15 minutes more? Okay, thank you. I understand it's a Sunday, but since we are learning, we can spare some time. And we'll be sharing our group link also. We have a Excel group on Excel learnings in on WhatsApp. So my team will be sharing it in the chat box. So you can join that group so that you get regular updates on the next meetings. And we put regular content also on the group on Excel, so you can get updates from there also. Okay, fine. So now we come to the next formula. Now, what happens if you want to invest on a regular basis? ठीक है, अगर आपको 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं और तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? You have an option to invest one time 5,67,000. Now, what happens if you are able to earn a higher rate of interest? तो सब चीजें लॉजिकल है, अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हो तो आपको
कम नंबर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। So I'm sharing my WhatsApp number. You can add me. And Sheetal has shared our channel link also. All are requested to visit the channel after this and subscribe also, so that you get regular updates. And we'll be sharing the group link also shortly in the chat box. चलिए, so now we come to the next function and I was asking you कि अगर एक साथ हमारे पास पैसा नहीं है, 5 लाख रुपए नहीं, और every month I want to invest, so what amount that will be, how we come to know about this? And before we talk about this, let us move to the rate function next. I think we'll be able to cover the 5 basic elements today, and rest we'll do on our next Sunday. Just a minute. So here this brings us to the next function, that is the rate function. Okay. So case 4, Shivani has invested 5 lakh rupees 5 years ago and it has now become 9 lakh today. What is the rate of return on the investment? तो कई बार ऐसा होता है कि यार इतने लगाए थे, इतना मिल गया है, हमने ये शेयर खरीदा था, इतने भाव में खरीदा, आज इसकी वैल्यू इतनी होगी है, क्या रेट ऑफ रिटर्न मिला, क्या भाव पड़ा, क्या इंटरेस्ट मिला हमारे को, ठीक है, तो कितना ब्याज मिला है रे बाबा, कितना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है हमारी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका आंसर मिलेगा आपको रेट फंक्शन से, ठीक है। तो विल जस्ट पुट द रेट फंक्शन हियर and is equals to rate, ठीक है। अगेन द पैरामीटर्स आर सेम। एनपीआर तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था, 5 इयर्स के लिए। व्हाट इज द पीएमटी, वाज देयर एनी पीएमटी और इट वाज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वाज देयर एनी पीएमटी, वाज शिवानी इन्वेस्टिंग एवरी ईयर और अ मंथली बेसिस और वन टाइम? So one time she had invested 5 lakh, ठीक है, we assume that। तो हमने ये अज्यूम किया कि एक साथ उसने 5 लाख रुपए लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे पीवी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो 5 लाख इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया इसका, 9 लाख रुपीस,